Hello friends, today I am going to discuss one of the most important topic not only for the 12 as well as for the engineering chemistry, and that is on green chemistry. Now green chemistry I think is very important in the current scenario because the kind of environmental destruction going on all around the globe, I think we all need to know to understand the concept of the green chemistry. In this video, I am going to explain the various aspects of the green chemistry to understand better. In my video, I am going to cover or discuss the definition of the green chemistry, the 12 principles of the green chemistry. Not only the 12 principles of the green chemistry, I am also going to tell you is very simple tricks how to remember those 12 principles. Then I am going to discuss the numerical on atom economy. Numerical and atom economy is very easy if we can understand it is on very clearly in a very easiest way. हम आसान तरीके से बात करेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल को हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकें, एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड. एडिपिक एसिड का सिंथेसिस भी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द एडिपिक एसिड इन द फार्मा इंडस्ट्री. अब ये एडिपिक एसिड का जो सिंथेसिस है हम लोग दो तरीके से डिस्कस करेंगे, वन इन द वेरी कन्वेंशनल वे और द ट्रेडिशनल वे, एंड द अनदर वन हाउ वी कैन सिंथेसाइज द सेम एडिपिक एसिड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन केमिस्ट्री रूट. नाउ लेट्स फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री. By the way, let me tell you the concept of green chemistry is being introduced by the very famous scientist Paul Anastas. He is from America. Now, according to him, the definition of the green chemistry, that green chemistry can be defined as a concept to use of chemistry for pollution prevention by designing the products and process that reduce or eliminate the generation of hazardous substances or chemicals. Now ये अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियरली बात किया गया है कि हमें we have to find out the better way. आपको जब हम कोई केमिकल प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं, क्या हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं ताकि उसमें जो केमिकल्स इन्वॉल्व हो, नो मैटर इट्स रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स और द बाय प्रोडक्ट जो भी है, देयर शुड नॉट बी हैजर्डस, दे शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ थ्रेट नॉट ओनली टू द एनवायरनमेंट और टू एनी लाइक लिविंग सिस्टम और ऑब्वियसली टू द ह्यूमन बॉडी. So ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. नाउ ग्रीन केमिस्ट्री, व्हाई दिस ग्रीन केमिस्ट्री सो पॉपुलर? बिकॉज ग्रीन केमिस्ट्री इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द डिजाइनिंग, और जो डिजाइन हम कर रहे हैं उसके भी अगर आप देखेंगे दैट इज माय पॉइंट, दैट कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इफ यू सी केयरफुली, नाउ ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोल रहे हैं? यू डिजाइन ए प्रोसेस. आप एक प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन करें ताकि हमें रिएक्टेंट कम लगे. रिएक्टेंट कब कम लगेगा? व्हेन माय द प्रोडक्ट इज आई एम गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट. अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम प्रोडक्ट या मैक्सिमम यील्ड मिल रहा है, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुड बी लेस. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिलना चाहिए. रिएक्टेंट आपको कम खर्चा हो रहा है. द एफिशिएंसी शुड बी हाई. एनर्जी नीड टू बी लेस. And ultimately, if I am producing maximum amount of product by using minimum amount of reactant, minimum amount of energy, and the minimum number of steps involved, obviously the cost of the product is also reduced. हमारा जो cost है product का वो भी कम हो जाएगा. सो अगर आप देखेंगे, अगर इफ यू सी द होल आइडिया ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री, आपको एक ऐसा तरीका चुनना है, एक ऐसा तरीका हमें डिजाइन करना है सो दैट द केमिकल्स आर लेस हैजर्डस, नीड ऑफ केमिकल्स शुड बी लेस, एनर्जी कम लगे, जल्दी बने, ज्यादा बने, खर्चा कम हो. दैट इज द होल कॉन्सेप्ट of the green chemistry. So the definition, I want all of you, please pause the video, write it down, needed for the exam. Okay, now let us discuss the main part of this entire video.
the main USP of this topic, and as I said, the main topic of this entire chapter, and that is the 12 principles of green chemistry. हमने अक्सर देखा है, no matter in which exams you are giving, they are asking write down the 12 principles of green chemistry. Now it is very difficult for any of the student to remember the 12 principles. और इसी के लिए मैंने एक छोटा सा क्विक ट्रिक्स बनाया, and that trick may help many of you to remember the 12 principles. अगर आप 12 प्रिंसिपल्स को देखेंगे, वी कैन टॉक द 12 प्रिंसिपल्स सीक्वेंस में बोलना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें खाली 12 प्रिंसिपल्स बताना है, एक्सप्लेन करना है, एंड व्हेनेवर वी आर एक्सप्लेनिंग वी शुड एक्सप्लेन विद अ ब्यूटीफुल एंड प्रॉपर एग्जांपल, ये हमें याद रखना है. सो लेट्स स्टार्ट. द ट्रिक्स इज, परी आज लखनऊ से दिल्ली इतनी दूर, लेकिन यहां पर दूर DUR, ऑल आर कैपिटल माइंड यू, सिनेमा देखने रुकी. ना यहां पर कितने अल्फाबेट है, देखिए 12. परी P, आज A, लखनऊ L, से. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. लेट्स स्टार्ट परी वेयर आई वांट द वर्ड P, because from the P we know that prevention of waste formation. Now prevention of waste formation means, according to the green chemistry, we have to design a process, a chemical reaction जिसमें बाय प्रोडक्ट कम हो. अगर बाय प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब द मेन प्रोडक्ट, द यील्ड ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज हाई. दैट इज द मेन मोटो ऑफ द दिस टॉप पॉइंट, दैट प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर वेस्ट जनरेट ज्यादा होते हैं, पहले हम कॉन्सिक्वेंसेस को देख लेते हैं. अगर वेस्ट जनरेशन ज्यादा होगा, इट मीन्स टू मैनेज द वेस्ट वी हैव टू पुट मोर टाइम एंड द मनी, एंड अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, जैसे एक एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे नाउ इट इज यू कैन सी वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल. नाउ फॉसिल फ्यूल बेसिकली द क्रूड हाइड्रोकार्बन ऑयल. ना ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, अगर हम इसको बर्निंग करते हैं, इट प्रोड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और फिर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन को हाउ टू control, how to manage, we are putting another area or more people or more money to manage those waste. But instead of that, according to the green chemistry, अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि if we are going to use the renewable resources, energy resources like the solar energy, the wind energy, CNG, इस टाइप के अगर हम लोग fuel use करें, then the production of such greenhouse gases will be reduced. So this is one of the example of prevention of waste. Now परी आज A for atom economy, that is very very important, and in the beginning of my topic, in the beginning of my video, मैंने already बताया that atom economy से numerical आते हैं, आ सकते हैं, जो कि काफी इजी है, और हम उसको और आसान तरीके से आपको हम एक्सप्लेन करेंगे. नाउ एटम इकोनॉमी का मतलब क्या है? एटम इकोनॉमी जैसे कोई एक रिएक्शन, मैं उसको 2 तरीके से कर सकता हूं, 3 तरीके से, 4 तरीके से भी डिजाइन कर सकता हूं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि व्हिच प्रोसेस, व्हिच रूट, व्हिच पाथ इज द बेस्ट? हमें कैसे पता चलेगा? सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग लेट्स से एसिटिक एनाइड्राइड और एनी ऑफ द केमिकल्स इन डिफरेंट वे, हमें पता कैसे चलेगा व्हिच वन इज द बेस्ट? द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज द कैलकुलेशन ऑफ एटम इकोनॉमी. जिस प्रोसेस में एटम इकोनॉमी का वैल्यू ज्यादा आएगा, दैट विल बी द मोस्ट बेस्ट एंड डिजायरेबल पाथ. हम इसकी बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ब्यूटिफुल एग्जांपल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. Now the third one is Lucknow, L for less hazardous chemical synthesis. हम कुछ ऐसे chemical synthesis करेंगे, they should be less hazardous. They should not be very highly hazardous. Like if you think about, like I have some example like chlorofluorocarbon, freons that we are using in the fridge for the refrigeration. Now you all know that chlorofluorocarbon is good, but that chlorine present in the chlorofluorocarbon, that emission of the chlorine may cause the depletion of the ozone layer. तो हम लोग क्या, so this it means that this is a hazardous chemicals. Hazardous chemicals, like it is creating some problem to the environment. Now instead of that, instead of that chlorofluorocarbon, now the scientists have the replacement like hydrofluorocarbon, HFC.
हमने क्या किया, हमने जो क्लोरीन, जो मेन कल्प्रिट था, क्लोरीन को हटाकर उसके जगह पर हाइड्रोजन दे दिया और बनाया HFC. सो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाउ वी आर यूजिंग एज ए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट. सो दिस इज व्हाट द ग्रीन केमिस्ट्री सेड, ऑलवेज फाइंड आउट द लेस हैजर्डस केमिकल्स. और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड. जब हम सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड की बात करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको फिर बताएंगे विद द हेल्प ऑफ ए ब्यूटीफुल एग्जांपल. देन से, लखनऊ से मतलब एस फॉर सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज. Now let us understand what is the meaning of auxiliaries. Auxiliaries is something which is not really very important for the product, but if we add such kind of chemicals, it will enhance the end property or the output. So that is auxiliary. Now safer solvent. जब भी safer solvent की बात आता है, the safer solvent in the world is obviously the water. सबसे safe water molecule, ये हमें आपको सबको पता है. After the solvent, after the water solvent, we can think about the acetones, we can think about the alcohols. To some extent they are safe, but we should avoid to use the solvent like xylene, toluene, benzene. These are the not at all safe, because they are the hazardous, they are carcinogenic, they are toxic, okay, for the nature, for the environment, and obviously for the human health. So this is what they are talking about, the safer solvent. So whenever we design, like I can tell you one example, nowadays we are using the paint. Now if you see, whenever we are using the paint, most of the times we are using the organic solvent like xylene or toluene. Now such kind of organic solvent we are using so that we are getting the dry film very fast. But can we design, can we produce? It is possible. We have seen that can we produce a paint which is water soluble? Now what happened, that water soluble अगर होता है, water evaporate होगा. Water evaporate होता है, atmosphere में moisture आएगा, we are absolutely fine with that, instead of that xylene, toluene, because they are carcinogenic. Okay, so that is safer solvent. Now लखनऊ से दिल्ली मतलब डी फॉर डिजाइनिंग ऑफ सेफर केमिकल्स. नाउ डिजाइनिंग ऑफ सेफर केमिकल्स, हमने पहले भी कहा है, सेफर केमिकल्स लाइक यू थिंक अबाउट द व्हाट हैपन इन द safer chemicals you are talking about, that in the most of the times we are using some kind of coating in the sea. समुद्र में जो जहाज वगैरह रहते हैं, we are using some coating for the anti fouling coating. Basically they are the anti fouling coating. वो coating क्या होता है, वो coating से जो coating वो foul नहीं होता, it does not come out from the surface. But sometimes from the traditional path or with the help of the conventional route, the people are using the coating which is highly hazardous, which are highly hazardous in a sense that fouling paint maybe goes into the body of the fish, and that after a certain time that same fish is being consumed by the human body, so it is hazardous. So what I'm talking, that designing for safer chemicals according to the green chemistry, can we make a paint which does not create such kind of problem? Okay, so that is called safer chemicals. Safer chemicals have a lot of example with me, a lot of example. In a sense, we know what happened in the Bhopal gas tragedy. Okay, we that is methyl isocyanide is a gas which ejected only for the 41 minutes and destroy the entire city for generation after generation. So safer chemicals, we should look into that whenever we design chemicals, whenever we design a reaction, whenever we design a process, the chemicals we are using, the chemicals we are planning to use must be safe. Okay, then the next one, ITNI, I for inherently safer chemicals for accident prevention. Now what does it mean by that? It means that chemicals that we are using, suppose I am using a chemicals. Now what happened, you think about an industry where we are purchasing or buying or storing the chemicals in a huge amount. Now what happened, सारे chemicals इकट्ठे तो हम use नहीं करेंगे, we are keeping the chemicals for certain time. Now while I am keeping the chemicals, for storing the chemicals, they should not create any problem like explosion. They should be safe. Okay, now not only the storing, suppose I am transporting on chemicals from one place to another place, that time also the chemicals should be safe. That is what I am saying, that they are inherently safe.
Okay, so this you can say that there are the 12 principles, out of which we have discussed the 6. Another 6 you can say here we have dur, यहाँ पर DUR, 3 principles I am going to talk, and another 3 as a C, D and R. That 6 we have discussed. Another 6 I am going to discuss, which will cover all the 12 principles. Okay, now we have already discussed 6 principles out of 12. Now another 6 is remaining. Let's start. So we have इससे पहले हमने यहाँ तक बताया था. Now let's start from DUR. D stand for Design for Energy Efficiency. Design for Energy Efficiency means जब हम कोई केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें ये देखना ज़रूरी है कि उसमें एनर्जी इन्वॉल्वमेंट शुड बी लेस. लाइक कोई एक केमिकल रिएक्शन, सपोज इट्स ऑकरिंग एट 1200 और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, कैन वी डिज़ाइन ए प्रोसेस बाय व्हिच द सेम केमिकल रिएक्शन हम लोग उसको लेट्स से 500 600 में कर सकें या 100 200 डिग्री में कर सकें. दैट इज कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी. मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है जो शायद आप लोगों को और इजी लगेगा टू अंडरस्टैंड. यू रिमेंबर, सबसे पहले येलो कलर के बल्ब आया करते थे, like filament bulb, which consume almost 100 watts of energy. Now that filament bulb is being replaced by the tube lights. Now tube light consume roughly 38 to 40 watts of energy. With the time, then in the market it came CFL, compact fluorescent lamp, which consume 10 to 15 watt. But if nowadays, if you see in every household, in every industry, and even in the municipal corporation, they are also using LED, and that is light emitting diode, and जिसका consumption, power consumption is only 5 to 6 watts. So this is called the energy efficiency. Okay, the energy efficiency, आजकल जितने भी electronic gadget are, and no matter if it is AC, we all know that ACs are of 2 types, 3-star and 5-star AC. The consumption of power is very high for the 3-star AC, but for consumption of the power is less for the 5-star AC. So ये बात जो हम बता रहे थे शुरू से कि दिस इज नॉट ओनली फॉर द केमिकल रिएक्शन. द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज वेरी वाइड एंड एप्लीकेबल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड. ओके, दैट इज अनदर थिंग. नाउ देन वी टॉक अबाउट द यू. यू स्टैंड फॉर यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक. नाउ यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. नाउ व्हाट इज रिन्यूएबल? जो फिर से रिन्यू कर सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल. जैसे कि रेन, पानी, जैसे कि क्रॉप, जैसे हम लोग चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, द फ्रूट्स, द वेजिटेबल्स, दे आर द रिन्यूएबल थिंग. ना ये रिन्यूएबल का कॉन्सेप्ट मैंने व्हाई आई सेड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टर्मिनोलॉजी, बिकॉज विद दिस रिन्यूएबल फीडस्टॉक द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री टॉक्स अबाउट द सस्टेनेबिलिटी. Now what is sustainable? Sustainable क्या है? जिस पे आजकल सब, अगर आप देखेंगे चारों तरफ, everywhere the researcher, the scientist, the engineer, everywhere, or the industrialist, they all are talking about the sustainability. Now what is sustainability? Sustainability means which is constant and continuous. जो आज भी है, कल भी होना चाहिए. Just like the sunlight. सनलाइट कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा. So this is the concept is sustainability. Okay, now renewable feedstock, we must have seen the metallic product become costly day by day. जो मेटल के चीजें होते हैं, जो कल जितना महंगा था आज उससे ज्यादा है, हमें पता है इन द फ्यूचर और ज्यादा महंगा हो जाएगा, बिकॉज द मेटल वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द नेचर. अब नेचर में क्योंकि वो रिन्यूएबल है नहीं, इसलिए उसका कॉस्ट बढ़ रहा है. और ऐसे कई सारे मेटल है जो पीरियोडिक टेबल में शायद आज हमें नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द यूजेस. ओके, नाउ एज आई सेड द यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक, जब हम एडिपिक एसिड की बात करेंगे वहां पर मैं फिर से बात करूंगा कि जो एडिपिक एसिड वी आर कन्वेंशनली वी आर यूजिंग द बेंजीन, बट द सेम एडिपिक एसिड वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ए वेरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेम इज ग्लूकोज. ओके, now after this we can go and talk about the R, and R stand for reduced derivatives. Reduced derivative ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक केमिकल रिएक्शन मैं कर रहा हूं A to B, B to C, C to D, D to E. 4 स्टेप में एक केमिकल रिएक्शन मैंने डिजाइन किया था. Can I use the same chemical reaction in only 2 steps or rather 1 step?
जो 4 स्टेप पे 5 स्टेप में कर रहे थे, अगर हमने उस नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस कर दिया तो क्या हमारे फायदेमंद है? आप खुद सोचिए, अगर जो रिएक्शन 5 स्टेप में हो रहा था, द सेम रिएक्शन इफ यू डिजाइन इन 2 स्टेप और 1 स्टेप, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट नीडेड इज लेस, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इज लेस, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट विल रिड्यूस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिड्यूस, एवरीथिंग विल रिड्यूस एंड दे ऑल आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी अगेन। सो रिड्यूस डेरिवेटिव का मतलब यह है कि जो केमिकल रिएक्शन 4 स्टेप में 5 स्टेप में हो रहा था या 6 स्टेप में हो रहा था, कैन यू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स, लेट्स से 2 और 1। ओके, आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट दैट परी आज लखनऊ से दिल्ली इतनी दूर। नाउ दूर, यहां पर आप स्पेलिंग को गौर करेंगे, आई हैव टॉक अबाउट द DUR। Okay, so this is a kind of a phrase that I developed to remember. अगर आपके पास कुछ और बेहतर है बिल्कुल करिए। Then we talk about the cinema. Cinema stand for C. I want this word because this is very very familiar, catalyst. And I think green chemistry का discussion अधूरा रह जाता अगर हम catalyst की बात ही नहीं करते, because we all know the catalyst is a substance which increase the rate of the reaction, give you the maximum product in minimum time, और उससे भी अच्छी बात यह है at the end of the day we are, or at the end of the process, at the end of the reaction we are getting the catalyst back. Okay, so catalyst again is a very very important part of the 12 principles of green chemistry. Okay, and I don't think that we need to discuss more about the catalyst. अब ये कैटलिस्ट काम कैसे करता है, मैं एक लाइन बताना जरूर चाहूंगा कि कैटलिस्ट नॉट ओनली रिड्यूस द एनर्जी, जो एनर्जी एफिशिएंसी की हम बात कर रहे थे उसमें कैटलिस्ट प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वी ऑल नो दैट। नाउ हाउ द कैटलिस्ट डूइंग इट? कैटलिस्ट हर एक रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। Okay, that we need to take a note, that catalyst increase the rate of the reaction by decreasing the activation energy. After the C, then we go for देखने मतलब D, I want the alphabet D for design for degradation. Design for degradation means the material that we are developing, the product that we are producing. हम चाहते हैं कि आप once the functions is over, they should degrade automatically. Like हमने कभी सोचा है कि are we bother about the paper? Are we bother about the cloth? ये जो कपड़े हम फेंक देते हैं, ये जो पेपर हम फेंक देते हैं, कभी हमने उसके बारे में we are not bothered because we know the cloth, the paper, the leaves, they automatically degrade. But what happened to the plastic? Plastic are not degradable. Plastic are not degradable, metals are not degradable, ceramics are not degradable by their own. So now the major concern in the environment is the plastic. We all know that. Now, can we develop a plastic which is degrade by its own? It means the green chemistry talks about the biodegradable plastic, and which is really possible and available in the market. So according to the green chemistry, can we use the plastic or the polymers which are biodegradable? It means once the job is done, they should easily degrade and again mix in the nature, does not create any hazardous to the environment. Okay, and then the last word is rookie, like I want this word R. Okay, because परी आज लखनऊ से दिल्ली इतनी दूर सिनेमा देखने रुकी। R is the real time analysis for pollution prevention. Why I'm saying the real time analysis? Now here we need to use the analytical methodology, the analytical process to understand कि भाई जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं उसका एक लाइफ टाइम होता है, उस लाइफ टाइम के अंदर हमें उसको यूज करना है। वंस द लाइफ टाइम इज ओवर, दैट प्रोडक्ट, दैट केमिकल्स आर गोइंग टू बी एक्सपायर्ड एंड वी कैन नॉट यूज इट फर्दर। सो दैट इज कॉल्ड रियल टाइम एनालिसिस। जब भी हम कोई भी हर एक चीज का एक एक्सपायरी होता है, वी ऑल नो दैट। नाउ व्हेनेवर वी आर producing any product or we are synthesizing any chemicals, we need to understand that everything we have to by some analytical technique, because now with the help of advanced technology we can easily find out the real time how long they can be useful. Like मेरे पास एक easy example है by which I think मैं सबको समझा सकता हूँ। See, whenever we are procuring और खरीदते हैं हम लोग ब्रेड के पैकेट खरीदते हैं, whenever we are buying a packet of bread,
ना ये ब्रेड जब भी हम लोग करते हैं, वी ऑलवेज सी द डेट, एक्सपायरी डेट. मोस्टली ऑन एन एवरेज एनी काइंड ऑफ ब्रेड प्रोडक्ट लाइक दे हैव ए एक्सपायरी डेट ऑफ 4 days. अब सपोज जब मैंने देखा कि ये जो ब्रेड मैं खरीद रहा हूं ये एक्सपायरी हो जाएगा कल, इट मीन्स आई हैव टू कंज्यूम द ब्रेड बाय टुडे. आज ही मुझे ब्रेड खा लेनी है. इट मीन्स वो टाइम आपको देख के वो हमें पता है कि उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उस हिसाब से हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं. सपोज इफ आई एम नॉट एबल टू कंज्यूम द ब्रेड विद इन 1 day or 2 days expired, then it expired. When it is expired, it has become a waste. So that is called real-time analysis, and I think that is possible for all kind of things. So these are the 12 principles of green chemistry. And now before I go to do the numerical on the atom economy, I think because now you have a very clear idea about the 12 principles of green chemistry, what is exactly the concept of the green chemistry, I think it is the best time that I should discuss the synthesis of adipic first. Okay, now let us start द सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड. वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था कि यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल ओके एग्जैक्टली व्हाट इज द ग्रीन केमिस्ट्री टॉक्स अबाउट, जहाँ पर 12 प्रिंसिपल्स के कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो होते हुए हमें दिखेगा. ऐसा ही एक सिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं, एडिपिक एसिड. एडिपिक एसिड इज वन ऑफ द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स which are mainly used for the synthesis of nylon. We all know what is nylon. Apart from the nylon, adipic acid is also used in the pharmaceuticals companies. It is being used in the lubricant company, in the dye company. So adipic acid is having a wide range of application. उसी adipic acid का एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेडिशनली हम लोग कैसे बनाते, कन्वेंशनली कैसे बनते हैं, बट उसी को वही adipic acid को हम लोग किस तरीके से कम खर्चे में विथ मोर एफिशिएंसी के साथ ग्रीन केमिस्ट्री से मदद से द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री यूज करके हम यूज कर सकते हैं. सो लेट्स गो वन बाय वन. एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताता हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन विथ रेस्पेक्ट टू द एग्जाम. एग्जाम की अगर नजरिए से देखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पाथ ऑफ सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड. अब देखिए, एडिपिक एसिड वी स्टार्टेड सिंथेसाइजिंग फ्रॉम द बेंजीन. Now benzene, I already told you, is not at all a safer chemicals because benzene is highly carcinogenic. So we started with the hazardous chemicals in the traditional path. Okay, then we are using the nickel and the alumina as a catalyst at 370 psi. Now what is psi? Psi is pound per square inch. Okay. Now then I am first of all I am getting a cyclohexane only. I am getting a cyclohexane. Look at this thing. We are getting cyclohexane. Okay. Now look at here what I am using here. I am using the carbon monoxide, which is another hazardous chemicals. Okay. We are using carbon monoxide. Now why the carbon monoxide? I am getting two products. One is cyclohexanone and another is cyclohexanol. क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है इसलिए cyclohexanol, यहाँ पर कीटोन का ग्रुप है इसलिए cyclohexanone. And then I am using again another hazardous, ammonium vanadate and nitric oxide. Okay, these are also hazardous chemicals. We know that. जैसे कर रहे हैं हमें main product, this is adipic acid. This one is very much adipic acid. But along with that, you can see there is a formation of byproduct nitrous oxide, which is not desirable. So in the traditional path, what are the problem we have faced? We face the benzene, carcinogenic. Okay, one is carcinogenic. Second one, the chemicals that you are using highly hazardous. Not good for the human health, not good for the environment, and moreover along with the main product we are getting a byproduct again. If byproduct is formed, it means आपको प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि बाय प्रोडक्ट बन रहा है, ऊपर से बाय प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज अ वेस्ट, एंड उसको भी वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके से देन यू हैव टू स्पेंड अनदर अमाउंट टू रिड्यूस टू रिमूव द N2O. So now look at very carefully where the greener path is so like greener path is very efficient with comparison to the traditional path. In the greener path, what you are using? We are using basically the D-glucose. So let me write, it is very much
a D-glucose we are using. Now let me start from here. D-glucose, नाम से ही पता चल रहा है कि glucose is not at all hazardous. It is very very safe. Number one. Number two, glucose. What is the source of the glucose? Glucose we easily get by the farming. Glucose is one of the byproduct in the sugar industry. So by using that glucose, okay, मतलब कहना क्या मतलब ये है कि glucose is a renewable feedstock and which is again obeying the one of the principle of the green chemistry. So it is a safer chemicals, it is a renewable feedstock. Okay, so we can use glucose. Now come to the E. coli. What is E. coli? Many of the students know E. coli is basically a bacteria which is easily available. Okay, so by using that bacteria, I can use one of the derivative of glucose, and again I am using the E. coli, and then we are going towards the product, and you can see along with the product there is no byproduct. कोई byproduct नहीं है. It means the yield here is the maximum. Yield here is the maximum. Now I am using the platinum. You must have talked platinum. Platinum is a noble metal. Hydrogen is again non-hazardous. So this is one of the safest way by which we can produce the adipic acid. अब अगर कंपैरिजन करने जाएं तो कंपैरिजन में दिखता है कि ग्रीनर पाथ इज वे बेटर देन द ट्रेडिशनल पाथ. व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द रिन्यूएबल फीड स्टॉक, वी आर यूजिंग द बैक्टीरिया व्हिच अगेन रिन्यूएबल फीड स्टॉक एंड सेफर केमिकल्स, एंड मोर ओवर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द बाय प्रोडक्ट. Okay, so this is again the kind of questions coming in the exam, like what are the traditional way, what is the greener path of producing adipic acid, and why the greener path is best. Because the greener path is best, it follow most of the principles of the green chemistry. Okay, now almost we are at the end of that video. Now we are only going to talk about the numerical on the atom economy that we told. So let's start the first numerical of atom economy. Look at this is a very simple reaction. ऐसा एक reaction रहेगा numerical में और पूछा जाएगा calculate the percentage atom economy with respect to chlorobenzene. Here यहाँ पर chlorobenzene है, reaction बदल जाएगा तो desired product भी बदल जाएगा. तो इस numerical को कैसे करेंगे? ऐसे numerical मिलने के बाद सबसे पहला step जो हम करेंगे, सबका molecular weight हमें लिख लेना है. जैसे हम सीधा नहीं करते, जैसे ये दिस इज बेंजीन, सो वी नो दिस इज C6H6. ये क्लोरीन है, मैंने फिर से लिख दिया दिस इज C6H5Cl प्लस HCl. बट यहाँ पर HCl इज नॉट माई डिजायर प्रोडक्ट. HCl हमें नहीं चाहिए. न्यूमेरिकल में बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज एटम इकोनॉमी विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरोबेंजीन. तो ये मेरा बाय प्रोडक्ट है, हम इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालेंगे. ओके, नाउ C6H6 इसमें हम देखेंगे 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है. कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, सो दिस इज कमिंग 78 यहां पर. Okay, 2 into chlorine, so 2 into 35.5 is equals to 71. Okay, नीचे लिखते हैं हम लोग ताकि तकलीफ ना हो. 71. Now here you can see we have 6 carbon, 5 hydrogen and 1 chlorine. 6 into 12, 5 into 1. Chlorine का atomic mass है 35.5. This is come 112.5. ओके, सो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं जो एलिमेंट हमें लगेगा. इसमें सारे रिएक्टेंट का आपको निकालना है बाय डिफॉल्ट और खाली डिजायर प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है. नाउ वी गो फॉर द फॉर्मूला. सो परसेंटेज एटम इकोनॉमी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूला इज. ओके, परसेंटेज एटम इकोनॉमी इज इक्वल्स टू, हम ऐसा लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट of desired product divided by the molecular weight of all the reactants into 100. Why I am multiplying by 100? Because हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज एटम इकोनॉमी. Now quickly put the value. Desired product
दिस इज माई मॉलिक्यूलर रेट ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है. सो इट इज 112.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट. सो एक 78, अनदर वन इज 71. सो इट इज लाइक 78 प्लस 71 into 100% करेंगे एंड इट विल गिव यू 75.5% इज माई आंसर. So this is so simple to calculate the atom economy. Okay, the percentage atom economy निकालना इतना आसान है. यहाँ पर याद रखना चाहिए, अगर मेरे रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट है तो कभी भी आपका परसेंटेज एटम इकोनॉमी 100% नहीं हो सकता. That is the first thing. Second one. Now question is coming, sir, ये एटम इकोनॉमी से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन ये है कि if the percentage atom economy is more than 70%, then we can, it is a very much considerable process. Like हम इस process को consider कर सकते हैं for the development of the product. Okay. Now we go for the last numerical of this video. So let's start the last numerical of this video. Okay, the question comes that again one chemical reactions is given in the numerical and they will ask calculate the percentage atom economy with respect to allyl chloride. So this is our allyl chloride, you can see that, and यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट भी बन रहे हैं. जैसे मैंने कहा, द मोमेंट यू सी देयर इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इसका मतलब मेरा परसेंटेज एटम इकोनॉमी 100% नहीं हो सकता. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट. सो यहां पर अगर आप देखेंगे CH3 CH CH2, सो देयर आर 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सो इट इज कम 42. 2 क्लोरीन है, इट इज कम 71 बिकॉज क्लोरीन इज 35.5, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, हमने बताया ऑलरेडी. यहां पर भी अगर आप देखेंगे, यहां पर 1 क्लोरीन 3 कार्बन 5 हाइड्रोजन. सो इफ आई पुट ऑल द वैल्यूज, यह आता है 76.5. ओके, 76.5 is the 76.5 is the molecular mass of this allyl chloride. 76.5 is the molecular mass of the allyl chloride by putting the value of chlorine 35.5, carbon, hydrogen, we सब पता है हमें. Now calculate the percentage atom economy. Okay, percentage atom economy हमें formula पता है. The molecular weight of the desired product. So this is my desired product. So 76.5 divided by the molecular mass of all the reactants. So I'm going to add 42 plus 71, okay, into 100%, and I'm getting 67.69%. So that is the atom economy of the allyl chloride with the help of this reaction. So with this we are done with the numerical of atom economy. और आज मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड वेरी नाइसली, वेरी बेसिक्स तरीके से हमने बताया है कि व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री, व्हाट इज द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, कैसे हम उसको याद रख सकते हैं. 12 प्रिंसिपल्स के जितने प्रिंसिपल हैं हम लोग सबको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है. Then we give the real example of synthesis of adipic acid, and at the end we discussed the numerical on atom economy. And I think this video will help many of us to understand the green chemistry very well. Thank you very much. Namaskar.